मैम रिकॉर्डिंग Okay. स्टार्ट कर Okay, सकते sir. हैं। Okay, sir. Okay, so student, very good afternoon to all of you. So today I'm going to discuss about your subject financial modeling with Excel. It's a revision class. So in detail, we will briefly discuss about every topic of your unit so that you may understand and do the revision of your classes कि आपके जो units हैं उनका revision हो जाए. And if you do have any doubt, at last we will ask about your doubts in last 15 minutes or 20 minutes of your session. So first of all, I'm going to give you a brief overview regarding your class of today's session. कि आपका जो unit है 5 units में divided है. This subject is being divided into 5 units. And इसमें आपका जो unit first है, that is about modeling overview and core concepts, in which you will let you know what is financial modeling, what about its application part, what are the tools you will use while doing modeling, what are the steps you had to follow in that while modeling. You should know about the dependent and independent variables, then how you can do it in the spreadsheet and its application part, then designing the spreadsheet model and using how you can use the formulas in that modeling. Then unit second is about modeling for business analysis, in which you had to you had to build on the model for financial statements. Then you had to analyze the financial analysis, analyze the financial statements of the company. That means financial analysis you had to do. Then you had to construct the pyramid of ratios, also known as Dupont analysis, and from the published financial statements. And then at last you had to do the reporting to the industry. So how you can do those things through Excel, and you should first know about the content कि ये चीज है क्या, how what about it and how you can do it. Okay, then unit third is about financial forecasting, in which on the basis of historical financial statements, you can do forecast, and how you can integrate and link those financial statements. What are the lag and lead indicators in that? What are the forecasting techniques you can use for doing the forecasting thing? And along with forecasting techniques, you should know about what is forecasting turnover, how expenses and current and non-current assets, liabilities are related to it, how you can adjust the seasonality if there is a seasonality pattern in that. Then you had to project the financial statements. Then next unit is about unit fourth is how you can model the valuation. Modeling for valuation means applying modeling tools and functions while you are doing the valuation of the financial statements. Then how you can do the cash flows projections, what are the discounted cash flow techniques and DCF inputs that you should know. What is beta risk premium, what about CAPM, weighted average cost of capital, DCF valuation कैसे करना है, understating जो DCF valuation है कैसे उसको आप easy language में understand करके उसके growth को देख सकते हो, उसकी terminal value क्या है, कैसे आप weighted average cost of capital calculate करोगे, how you will calculate beta risk premium, ये सब. And last unit is about modeling for uncertainty, in which simulation and sensitivity analysis you will see, and what if analysis you can do ki, based on what if analysis is what ki on the basis of different scenarios you are seeing what is more beneficial. Okay, so in that, what is the objective or goal of that company, accordingly you can plan the scenario, and on that basis you are on planning that scenario on the basis of some assumptions, and then taking the result, then analyzing the result of actual with the standard one. Okay, so this is about the basic syllabus. So I'm going to share my screen, in which we will discuss about first unit, that is modeling overview and core concepts. Okay, so I'm going to share my screen. Share. So my screen is visible to everyone. Please respond. Is my screen is visible to everyone? Rashika, Varun, Kavita. Yes, okay. Okay, so I'm going to continue.
So first unit is about your modeling overview, the core concept you should know, understand the concept of financial modeling, various tools used in it, then evaluate the benefits and cost associated with financial modeling, then evaluate the benefits and cost. Then after that, you had to evaluate various skills needed for this, and what is the concept of dependent and independent variable. Then you had to explore the steps while doing it in the spreadsheet. Okay, so one by one we will discuss all these things. These are the main learning objective while you are studying this unit. So first is financial modeling. What it means: financial modeling basically is a systematic and scientifically you are doing the representing the situation mathematically, which involves the finance of an individual or corporate or government. Okay, so in that what you are doing, you are making a mathematical representation, or you are doing the for example, you do have a situation, and that situation you are presenting it in a very scientific systematic way through mathematical representations. Okay, तो financial model जब आप ऐसा बनाते हो through mathematic formulas और ये सब करके, तो what it जो ये है model जो आपका बनेगा, why you are preparing it? Why? Because this model helps you in analyzing, in identifying the trend, in identifying the future फोरकास्टिंग एंड फ्यूचर ट्रेंड एंड बिहेवियर. ठीक है, तो जब भी आप कोई मॉडल बनाते हो तो उसको जब आप बनाओगे तो उसका क्या फायदा है कि जिससे कि आप फ्यूचर के ट्रेंड, फ्यूचर में क्या होगा, उसका ट्रेंड क्या रहेगा, उसका बिहेवियर क्या है, ये जान सको. ओके, सो द मॉडलिंग मेक यूजेस, और जब आप ये मॉडलिंग कोई भी मॉडल बनाते हो तो इन दैट मॉडल you can make use of charts, graphs and mathematical equations so that you can study the financial aspect of that financial project, asset or investment. So financial modeling basically हम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई सिनेरियो, कुछ पर्टिकुलर चीज जो है स्टडी करनी है, तो हम मॉडल डेवलप करते हैं और थ्रू ग्राफ और चार्ट्स उसको स्टडी करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू. सो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज कॉमनली यूज्ड बाय द रिसर्च एनालिस्ट so that they can make estimate about different type of investments. और अदर देन इज इसके अलावा भी जब फाइनेंशियल मॉडलिंग करता है कोई, तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए वो यूज में आती है. जैसे फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग. इट इज to analyze all the important facts and available information so that optimal decision can be made on. So it make use of systematic and structured approach so that it can take the better decision. Second, it is also used in forecasting and planning. जब भी हम financial model बनाते हैं तो result of those financial model, what we do by those results, we do the forecasting and we do the planning about future. Then estimation of value. It also helps in estimating the values on the basis of future value, on the basis of present values. Future expectations क्या होंगे हम predict कर सकते हैं, estimate कर सकते हैं. तो financial modeling basically is a popular technique for setting present and future valuation of different assets. अगर हम companies के उसमें बात करें तो हम different assets की जो है valuation निकाल सकते हैं. ठीक है, देन रिस्क एनालिसिस भी हम जान सकते हैं. वी कैन ऑल्सो नो फाइनेंशियल मॉडलिंग मेक यूज ऑफ वेरियस परमिटेशन कॉम्बिनेशंस and it do many simulations so that it can forecast about future while taking considering various risk factors, various very different types of economic situations and other variable factors. Then capital budgeting decision is also a very much important or you can say crucial topic while making any decision, risky decision in the organization. So because why? Because in capital budgeting, what it involves a large sum of money which is generally not reversible. Okay, so that's why deciding about a particular project, whether we had to invest in it or not, it needs careful and detailed analysis, and which can be done through financial modeling. Okay, so this was about financial modeling, what it means, and what are the various other applications or various other areas where it can be used. Okay, so this was about financial modeling. Then when we talk about it's being a systematic and scientific analysis tool, has a set of specific components that form part of each modeling. So few of them are listed here.
व्हाट आर दोज, जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करते हैं तो पहली जो चीज है वो है अजम्पशंस। जब हम फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं तो दोज फाइनेंशियल मॉडल्स आर बेस्ड ऑन सम अजम्पशंस की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड भी एक स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसमें हम थ्रू मैथमेटिकल फॉर्मूला एक रिलेशनशिप डिराइव करते हैं और उसमें देखते हैं कि इफ इट इज डिमांड इज अप और तो उसका सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा, राइट। तो वहां पे हम कुछ अज्यूम करते हैं, अजम्पशंस रखते हैं कि if these are there then this model will work. Likewise in financial modeling also यहाँ पे कुछ हमारी assumptions होती हैं रिगार्डिंग पॉपुलेशन, हो सकती है सैंपल के रिगार्डिंग, हो सकती है स्टैटिस्टिक वेरिएबल्स या अदर पैरामीटर्स के रिगार्डिंग, जो कि important you can say are the most important or crucial component of any financial model. So सारे financial model अगर हम बात करें those are based on some statistical operations जो कि रिक्वायर करते हैं, जिनकी जरूरत है कुछ assumptions की, कि कोई भी financial model बिना assumptions के रन नहीं होता, रेयरली है। ओके, सो ऑल financial models are basically based on some statistical assumptions. Now historical data, कोई भी अगर हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर का, इट इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। सो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज थर्स बेस्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा विच इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मॉडल्स। ठीक है, तो जो भी फाइनेंशियल मॉडल आप बनाते हो फ्यूचर के लिए, जब भी हम कोई फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके थ्रू फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की, फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली कोई भी जब हम फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर के बारे में, वो डिपेंडेंट होता है आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो लाइकवाइज जब आप फाइनेंशियल मॉडल बनाओगे तो इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन फाउंडेशन ऑफ historical data. Then financial statements. As the name suggests, financial statements, financial modeling is aimed at developing model to estimate the future financial aspects of investment or project or strategy. So जो मेन थिंग है यहाँ पे क्या है कि फॉर मेकिंग प्रेडिक्शंस फाइनेंशियल डेटा दैट कैन बी असेस्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नीड है, जब भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करोगे तो यू नीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा ओनली यू कैन प्रेडिक्ट। ओके, सो देयर इज अ नीड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Then there is a need for financial ratios, कि financial ratios भी आप कहाँ से calculate कर सकते हो, only through the financial statements. So not only does financial modeling depends upon the financial statements, but also on the financial ratios also depends upon the financial statements. Then scenario analysis. As financial modeling involves making forecast about future, तो future is uncertain, so it requires estimation of different events कि अगर ये event होगा तो क्या उसकी वजह से future में changes होंगे। okay, तो future is uncertain, अगर in future कोई ऐसा event occur हो जाए जिसकी वजह से जो आपने चीजें plan की थी वो इधर उधर हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, वो चीज उस इवेंट की वजह से, तो वो सिनेरियो भी आपको एनालाइज करना है कि अगर मान लो कोविड कंडीशन थी और आपने प्लान किया था आपको लेबर इतने रेट में मिल जाएगी 100 रुपीज पर आवर, बट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन नाउ इट इज नॉट लाइक 100 रुपीज पर आवर, इट हैज चेंज्ड कि वो कम भी हो सकती है, ज्यादा में भी मिल रही है उस टाइम पे, अकॉर्डिंग टू योर एरिया और योर प्रेफरेंस। सो अगर ऐसे इवेंट्स हैं या अनसर्टेनिटीज हैं तो you had to do the scenario analysis also कि उस scenario में what step you had to take. So these are various techniques of conducting financial modeling. Like discounted cash flow technique is there, which identify the present value of worth of investment or project by discounting the future stream of cash flow. So these are some of the things. So modeling of financial modeling has become very popular over the years and is continuously evolving. So with the technical upgradation and use of the artificial intelligence and machine learning, future of financial modeling is bright and as well as dynamic. Okay, it's also a dynamic and it's bright. So various industries uses this financial modeling and has used it, to which financial modeling can be put to use are in corporate finance, they can use, in equity analysts they can use, and in startups and entrepreneurs can use this financial modeling so that they can do the projections regarding their future. Okay, so अदर देन दीज की कॉर्पोरेट्स में फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज कर सकते हैं, इक्विटी एनालिस्ट जो हैं वो यूज कर सकते हैं, स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग का यूज कर सकते हैं, सो दैट दे कैन
do the predictions about their future. So other than above these, financial modeling is of great help in other fields that require future projections. Like financial modeling has though many advantages. If I say हर चीज के pros and cons होते हैं. Likewise financial modeling की बात करें तो उसके भी कुछ challenges हैं जो उसे देखने हैं. While doing financial modeling you had to see those challenges. First is related to data quality and accuracy. Data quality, basically financial modeling makes its forecasting on the basis of what? On the basis of historical data या फिर current data. Okay. अगर data quality means कि जो data आप collect कर रहे हो, अगर क्योंकि financial modeling में क्या use करते हो आप? Past का data या फिर current data, और उस current data या past के data पे आप future को जो है project करते हो, future को predict करते हो. तो अगर वो data, if data is not correct, okay, तो आपका जो भी analysis होगा that will be wrong. So you cannot judge the accuracy of that data, okay, and on that basis you can't say that your results are reliable. So what analyst has to do, he has to take out the first of all right data, and from that right data they had to take the relevant data which is applicable to their objective. अब उनके पास data तो बहुत सारे collect हो गया, which is relevant, that from that collected data they had to take that. Okay, so whole purpose जो है उनका that should be covered, otherwise results will not be according to their objective. Now next is assumptions risk. Financial modeling basically assumptions पर based है. तो जो results और forecast हैं that are also based on assumptions. So generally while we do financial modeling in considering the assumptions, तो assumptions basically are far from reality. हम assume करते हैं कि ऐसा होगा, right? But it poses the assumption risk that may lead to fabricated results that are true in terms of modeling but not in terms of real world. Okay, so due to those assumptions जो results है, we can't say that they are up to the mark, they are up to the reality. उनको हम बोल सकते हैं that are fabricated result. Why? Because we had followed some assumptions which are not applicable in the real world. Then model validation. Model validation is also a challenge. Why? Because financial modeling is based on quantitative models and assumptions, and while doing its application, you had to validate it through multiple checks or under various scenarios कि ये model valid है भी या नहीं उस scenario के लिए. Okay, so models are needed to be continuously upgraded. It should be reviewed, it should be revised so that they can accommodate the changes according to their business environment. Then only that model is a successful one, otherwise not. Then next is communication and transparency. Communication and transparency, basically the results of financial modeling जो है that are used by the analysts and entrepreneurs or various stakeholders so that they can take the decision about their future course of action. Okay, but when we say communication and transparency, तो जो financial modeling है basically it is based on quantitative and statistical techniques के base पे quantitatively based है, तो it is not easy to understand for all. जिनको knowledge है about those statistical techniques, those techniques that are being used, whether it is a statistical or mathematical, it may be understandable by those people, those who can understand that. Okay, तो यहाँ पे अब जो ऐसे persons हैं, various stakeholders हैं जिनको need है कि वो ये चीजें जान सकें, तो what they had to do, they had to possess some communication. उनको कुछ report form में उनको communicate करना पड़ेगा so that they can maintain the transparency about their working. Okay, so जो financial modeling के results हैं, analyst, entrepreneurs ये सब use करते हैं so that वो future course of action ले सके. और being quantitative and statistical nature, हर कोई इसको easily understand नहीं कर सकता. So it thus poses issues related to communication and to maintain the transparency कि हर stakeholder mathematical और statistical language नहीं समझ सकता financial modeling में basically वही use होता है. तो ये भी इसका एक challenge है कि कैसे उन reports को वो communicate करेंगे so that transparency maintain. Okay, so in spite of above these challenges all,
Financial modeling is an indispensable tool which allows to for informed decision making and is the need of era. Okay, so currently agar hum kahe, it's the need of era, and every company is using it so that they can project their make the decisions based on their projections. Now the chapter will provide you the brief snapshot regarding the tools or models or variables that forms the base of financial modeling. First is tools for modeling. Financial model makes use of various types of tools that help in creation, presentation, analysis of data. Okay, तो tools का हम क्यों use करते हैं? जिससे कि जो भी data हमने collect किया है, हम उसको किस तरीके से create कर रहे हैं, कैसे present कर रहे हैं और उसका जो है analyze कर रहे हैं. तो उसके लिए हमें tools की जरूरत होती है जिससे कि हम easily understandable manner में reports में show कर सकें. तो tools how do they help? They help in making the model very simple, but also ensures that results that are derived from that model are very systematic, very scientific, replicable, and are valid. Okay, so most common tools for financial modeling are: first is spreadsheet software. Spreadsheet software basically is a computer application that make use of different cells, rows, columns, wherein quantitative data you can enter, you can modify that data, analyze that, and present that. So commonly used spreadsheet softwares are Microsoft Excel. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप एक्सेल में अपना डेटा क्वांटिटेटिव न्यूमेरिक फॉर्म में डाल सकते हो, उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो और उसके बेसिस पे अपने डेटा एनालिसिस करके प्रेजेंट कर सकते हो. दिस इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर. देन सेकंड इज Google Sheets. Through Google Sheet, this is the alternative to Microsoft Excel, and it provides the features. Just a second. In Google Sheet, along with the Microsoft Excel features, what it provides the benefit of real-time online collaboration. Okay, so it may lack in some formulas or detailed data analysis tools as provided by Excel, but its online connectivity, it provides the advantage that is making popular amongst the financial professionals. ठीक है, तो through Google Sheet आप online अपना data सारा share कर सकते हो. Even though some challenges are there, but it's a very used software nowadays. Next is your programming language. Programming language, financial model basically make use of the computers, and it becomes imperative to make use of language that the computer can understand. So here comes the role of programming. कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं विच एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द एनालिस्ट एंड द कंज्यूमर्स. कि जो एनालिस्ट है वो कोडिंग करेंगे और कंप्यूटर की लैंग्वेज में, सो दैट through that coding computer may understand their thing what they want. Okay, so that coding or programming languages are Python and R. Python is the popular one, commonly used programming language for web and software development, financial modeling, system scripting. Iske alawa R is also there. It is another programming language that has got eye of the analyst and academicians. Through R software you can do the financial modeling, and also the statistical calculations also you can do through R. Okay, then next is your financial modeling software. Financial modeling software are the software that are dedicated to make use of machine learning to process large data and give out you the financial results which you can analyze and interpret and make on the basis of that you can do the decision making. So what they do, financial modeling softwares, they automatically pull and analyze the data for your financial decision making. So some examples of these softwares are Cube, Oracle, BI, Quantrix, Solve, and many more. Okay, now it depends upon the complexity. Modeling software कौन सा आप select करोगे, it depends upon the complexity of the decision making, cost involved, various factors. On that basis you had to select which software you are going to use. The next is your business intelligence tools. These are the contemporary tools that collect, process, and analyze large data set. Okay, so BI tools are capable of data mining. की large data set है, उसमें से आपको जो important है that you had to collect. So data mining you can do, data ko then you can do, after data mining you can do the data visualization. Okay, then on the basis of data mining and visualization you can do the reporting, predict those analytics, and text mining, and many more tasks you can do. Then data after that
BI tools के examples जैसे कि Microsoft BI है, Tableau है, Quick Sense है, Tenbas BI. These are the some of the examples of these softwares through which you can do these things. Okay. Then statistical analysis software की आप financial modeling में अगर statistical tools का use कर रहे हो तो वो कैसे कर सकते हो, उसके लिए regarding क्या softwares हैं. These are SAS, Strata, eViews, SPSS. So through these softwares, you can do the statistical analysis. Like if you want to calculate the Z test, T test, correlation, regression, or mean, median, mode. So statistics से related जितने भी हैं आप those things you can do through these softwares. Then data visualization tools. These are the tools that present data in visually attractive manner कि through graph, through bar chart. Okay, तो जो ग्राफ है, बार चार्ट है, इन सब के थ्रू आप डेटा को शो कर सकते हो. तो डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हेल्प्स to present the data in very attractive manner in the form of chart, graphs, or other forms, so that you can see the data analysis. Okay, or this tools complements statistical analysis softwares, and sometimes the same tool can also be used to do the dual work of data analysis along with the visual analysis. Okay, along with that visual analysis, you can also do the data analysis. Next is database management system, that is DBMS. These are the softwares where you can store, retrieve, and run queries on the data if you do have. Okay, so it's like a storehouse of data from where you can extract the data, update. You can update that data and also delete that data. Okay, so it helps in managing a large database which you can use for analysis as and when required. Then financial data providers. The starting point of financial modeling is to do the analysis. Here comes the need of data providers that provide data for long period of time. So financial modeling is more reliable agar if you have large data set. Okay, financial data providers में बेसिकली क्या है कि जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है उसमें आपको डेटा एनालिसिस करनी है. तो अब डेटा एनालिसिस करनी है तो यू नीड द डेटा, और डेटा भी अगर आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, और जितना ज्यादा डेटा सेट होगा उतना ही ज्यादा आपका रिलेबल रिजल्ट होगा. ओके, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग इज मोर रिलायबल इफ लार्ज सेट ऑफ डेटा इज यूज्ड to create the trend, to create the trend pattern, or to create the trend pattern and do the predictions. So data providers hence solve this issue by providing access to data over a long period of time. So few data providers are these agencies like NACTED, OECD, Bloomberg, and Center for Monitoring Indian Economy. These are some of the examples from where you can collect the data for doing the financial modeling. The next next we can say that what are the skills required for financial modeling, or what are the steps of modeling. Okay, as discussed above that financial modeling is an important tool for making informed decisions regarding how the historical data you can collect, what environment situations you had to consider, and other related data. Okay, so as the name suggests ki jo modeling hai, prediction hai, that is based on the financial data. So there are certain expertise and skills are required for modeling process. Which are those? First is spreadsheet management, कि जब आप financial data as a financial analyst आप काम करोगे तो what skills as a financial analyst you do have. First is spreadsheet management. Okay, just a second. Hey, just a second. So first is spreadsheet management. Spreadsheet management basically is the fundamental step in financial modeling. कि जब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हो तो सबसे पहले आप चाहे गूगल शीट के थ्रू बना रहे हो या एक्सेल शीट के थ्रू बना रहे हो, यू शुड नो अबाउट द हैंडलिंग ऑफ ऐसी चीजें शो करनी है, हाउ यू डू दैट. ओके, तो जो टास्क आपको करना है उस एक्सेल शीट में या गूगल शीट में, उसको कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, दैट यू शुड नो. ओके, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू शुड नो. Then next is understanding the financial statements. A second.
Understanding the financial statements. Why? Because while you are doing the financial modeling, it is basically based on the data that is assessed, that you can take from the data providers, or you can take that data from the financial statements. तो फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली आप कैसे करते हो? जो भी डेटा आप कलेक्ट करोगे, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करोगे, या फिर आपको कोई प्रोवाइड करेगा। तो जो डेटा है वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू ले रहे हो। सो जो मॉडल आप क्रिएट करोगे, दैट रिक्वायर्स अ डीप एंड थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द statements, their interlinkages and their role in that financial modeling। और वो कौन हेल्प कर सकता है? जो प्रोफेशनल है, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग करता है, तो उसे पता है कि क्या क्या वेरियस कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, जिनका यूज करके उनको वो मॉडल बनाना है, एंड देन दे हैड टू डू द फाइनेंशियल मॉडलिंग। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, नॉलेज ऑफ दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सेकंड स्टेप। देन थर्ड इज फोरकास्टिंग टेक्निक्स। Forecasting techniques means कि while you are doing the financial modeling, what techniques you had to know, forecast to know, so that you can do the forecasting. So professionals are required. Financial modeling has to be aware about various trends, seasonality patterns, structural factors that can have impact on business and hence needs a place in financial modeling. Okay, तो जब भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग में बात करोगे फोरकास्टिंग टेक्निक्स की, तो जो प्रोफेशनल है, द पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ doing financial modeling, he should be aware about what, about the trend of that data, कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, about seasonality patterns of that data, कि जो डेटा कलेक्ट किया है उसका पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या है, उसका सीजनैलिटी पैटर्न्स क्या है, वो रिपीट होता है या नहीं, देन स्ट्रक्चरल ब्रेक तो नहीं है बीच में, देन इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स तो नहीं है जो कि इम्पैक्ट किए हैं बिजनेस को, दैट आर बीइंग इंक्लूडेड इन दैट डेटा। देन मॉडलिंग टाइप्स। मॉडलिंग टाइप्स इन फाइनेंशियल मॉडल्स कैन बी क्रिएटेड based on discounted cash flow technique or consolidated model. So what modeling type you are using, that you should know. So you should or you can say a professional needs to be well versed in all methods, okay, so that they can do the analysis in better way. The next is industry knowledge. Knowledge about the industry to which company belongs is very much important while you are doing modeling. It should not be a new for the professional. Otherwise, he should be otherwise he doesn't solve the problem. Okay, if he or she knows about the knowledge about the industry, ki that this is the industry, it deals in these product, it is the nature of this industry, so he can tackle various risks and opportunities associated with that industry, and it can do it can be discounted in his model. Then risk analysis. Financial modeling expert जो भी है उसको जरूरत है कि वो identify उसको there is a need कि he should be well versed with identifying, analyzing and assessing the risk and incorporate it in financial model। कि उसको पता होना चाहिए, वो expert होना चाहिए, जो भी financial modeling कर रहा है, that person should be well versed, would be professional in identifying, in analyzing and assessing the risk related to that, okay, so that जो risk है उसको वो अपने उस model में, financial model में include कर सके, incorporate कर सके। So सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो प्लानिंग, ये सारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं while doing the financial modeling, while deciding on the मॉडल। ओके, तो यहाँ पे सिनेरियोज वो देखते हैं कि अगर मान लो इतनी कॉस्ट है और इस कॉस्ट पे इतना हमारा सेल्स हो रहा है, अगर उस कॉस्ट में जो कंपोनेंट्स है उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, ये सिनेरियो है कि एक कंपोनेंट में कुछ चेंज हो तो उसकी वजह से सेल्स पे क्या इफेक्ट हुआ, राइट। तो वो सिनेरियोज देखना इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट थिंग for doing the risk analysis. Then next is communication and presentation skills. Communication and presentation skill means कि while you are doing the financial modeling, it basic purpose or basic objective of doing financial modeling is what? Why you are doing the financial modeling? So that you can have the better decisions on the basis of results of those financial modeling. So what is the need or what is the ultimate objective of doing financial modeling? That the results should be communicated or interpret in a way that is understandable in easy or understandable to various stakeholders very easily. Okay, so professional
For communicating those results, professional needs to have good communication skills so that they can present the results in very simple, understandable manner to various stakeholders. Then knowledge about technology, as the whole modeling is based on the softwares that the company is going to use. So the expert who is doing this financial modeling, he or she should be well versed and updated regarding the technology so that they can ensure that the model makes use of most recent updated technology so that they can get the updated results and reliable results. Okay, so they should be updated one. Now, while you are doing the financial modeling, what steps you had to follow? कि जब भी आप कंपनी जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए ऑप्ट करती है तो व्हाट स्टेप्स दे हैड टू फॉलो. फर्स्ट इज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव कि व्हाई दे आर गोइंग फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग. व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड टू set up the very clear quantifiable objective of their. ओके, जिसको वो क्वांटिफाई कर सके, जिसको वो बता सके और वेरी क्लियरली बता सकें कि दैट दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड फॉर दिस ऑब्जेक्टिव दिस पर्पस दे आर गोइंग फॉर financial modeling. Okay, so objective should define whether it is needed for forecasting. अब जब वो पर्पस बता देंगे, ऑब्जेक्टिव बता देंगे कि yes this is the objective, for that purpose they are going for doing financial modeling or going for financial modeling. तो अब वो पर्पस क्या क्या हो सकता है, whether it is related to forecasting कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करना चाहते हैं, या फिर the purpose is about decision making or valuation or other specific objective. So that specific objective they had to decide on, that this objective, for this objective they are going to do financial modeling. The next is gathering the required data. Gathering the required data means after defining the objective, clear cut objective very clearly, ये objective है, for this purpose they are going for financial modeling. For that objective they had to gather the required data. Okay, whether it may be related to company, industry or economy. Okay, so this is the second step. Then third is, after collecting the data they had to prepare the model, they had to make the model, and that financial model is based on statistical techniques. So assumptions about the model, that also they had to do, कि what assumptions they had to follow while structuring that model. Okay, जब वो model बनाएंगे तो उस model में क्या assumptions वो लेके चलेंगे, that assumptions also they had to clarify. Then next is forecasting. Next step is, after making that model and doing the assumptions, नेक्स्ट स्टेप इज टू फोरकास्ट अबाउट प्रोजेक्टेड रिस्क, कि अब जो मॉडल बनाया है उसमें कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, उसमें कितना प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट रखा है, कितना प्रोजेक्टेड कंपटीशन होगा, और ऐसी कुछ चीजें जो बाद में मॉडल में इनकॉर्पोरेट करनी होंगी जिससे कि वो मॉडल एक रिलायबल रिजल्ट दे सके. ओके, तो वो दे हैड टू प्रोजेक्ट ऑल दीज थिंग्स. देन नेक्स्ट इज मॉडलिंग. इट इज द मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्टेप. While considering all these 4 points that we have discussed, last में आपका ये मॉडल बनेगा जिसमें आपने ये सारी चीजें इंक्लूड की हैं, and this is the base on which the decision making is done. So this is the most crucial step now to create model. Okay, so this is the most important step where you are deciding that you had to create the model by considering all above factors. And this model is why it is important, because it selects or it makes the whole decision successful or unsuccessful. कि अब आपका मॉडल बन गया, अब इसी के बेस पे या तो कंपनी जो डिसीजन लेगी वो डिसीजन सक्सेसफुल होगा या फिर अनसक्सेसफुल होगा. Then next is sensitivity analysis. Sensitivity analysis is an important concept before analysis and interpretation. मतलब आपने मॉडल बना लिया, अब उसके बेस पे आप क्या है एनालिसिस करोगे, and in that analysis before going for decision making, interpreting the results, what is the main thing you had to consider? Sensitivity analysis. You have to do it before analyzing or interpreting the results.
And what it involves making changes in the key assumptions and findings. It impact on the output कि अगर you sensitivity मतलब जो key assumptions आपने ली हैं, ठीक है, कि अगर जब भी आप कोई मॉडल बनाते हो, जैसे आई हैड गिवन एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड है या लॉ ऑफ सप्लाई है, तो आप उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको आप रन करते हो कि इफ देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड there is increase in supply, because of increase in demand because of increase in demand there is increase in supply. ठीक है, ये assumption लेके चलते हो ना, तो वही assumptions कि that but in reality those assumptions may not be true. तो वही assumptions हैं, अगर उन assumptions में कुछ changes हैं तो that is sensitivity analysis कि if you are making changes in the key assumptions and findings और उनका impact क्या होगा final decision making पे, that is sensitivity analysis कि आपको वो sensitive चीजें ध्यान में रखनी है before interpreting the results. The next is validation. The model has been established need to be tested before going ahead. Okay, तो जो भी वैलिडेशन का मतलब है कि जो भी मॉडल आपने बनाया जिसके बेस पे आप डिसीजन मेकिंग लोगे, उस मॉडल को रन करोगे, तो बिफोर गोइंग अहेड विद डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग से पहले आपको क्या करना है, उस मॉडल को टेस्ट करना है वेदर इट इज बीइंग वैलिड और नॉट. और वैलिडेशन के लिए आप क्या करोगे, उस मॉडल का पायलट टेस्टिंग करोगे. पायलट टेस्टिंग कैसे, जो आपका पास्ट डेटा है उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, उस मॉडल में वैल्यूज डालोगे, उस मॉडल को प्रेडिक्ट करोगे एंड देखोगे कि वेदर its values are showing the reliable results or not. After validating, you will go for the documenting and reporting. Okay, so then you had to validate the results. जो आपने वैलिडेशन के बेसिस पे जो रिजल्ट्स दिए हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस के बेसिस पे, तो वो रिजल्ट्स आर नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड. उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे और उसको प्रेजेंट करोगे इन अट्रैक्टिव मैनर टू द नीड टू द कॉर्पोरेट, जो भी जिसको भी उन रिपोर्ट्स की नीड है. Okay, so this is about your steps what involved in financial modeling. Now next is independent and dependent variable. While constructing model, one has to see just a second, एक minute, Anu. ओके, वाइल डूइंग फाइनेंशियल मॉडलिंग, आप मॉडल बनाते हो. अब मॉडल का मतलब क्या है, एनीवन इन द चैट कैन यू लेट मी नो मॉडल हाउ यू विल कंस्ट्रक्ट इट. कनिका, सॉरी, वरुण, रशिका, कविता, anyone know about by forecasting? No. Model, dependent and independent variable, what it means? Saroj? Yes. Dependent variable. Okay, while you construct the model, not by forecasting, while you construct the model, you had to know about regression equation. I think you all know y equal to a plus bx. Okay, so y is your dependent variable or independent variable? Write it in the chat box. Y equal to a plus bx. This is your model. I had written it in the chat box. So let me know, y is a dependent variable or independent variable? Rashika, Varun. Okay, correct. It's a dependent variable. A is your A and B X.
You all are not muted. You can use your mic if you just don't write it, Saroj. You can use your mic and say. Saroj, Varun. Saroj, you can unmute yourself and say. Anyone you has the SS, you can unmute yourself. Saroj, can you unmute yourself? Anyone among the class? No. Okay. बट ये ऑप्शन आपको अवेलेबल है बेटा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. एक बार ट्राई करो, जस्ट ट्राई. Rashika, you can unmute yourself. Varun. No, it's okay. Okay, so I think you are not being able to able your mic, so I'm going to just do start with the revision class. So what about dependent and independent variable? Dependent variable basically is on the left hand side of your equation equal to, ठीक है? तो dependent variable and independent variable. Independent variable, as you said, y is equal to a plus bx. So y is your dependent variable, x is your independent variable, and because of there may be one independent variable or more than one independent variables. एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं आपके independent variables. तो जो आपके independent variables हैं, because of change in that, how much change is there in the dependent variable, that you can see, and this is a regression equation. Okay. तो यहाँ पे in independent while doing the financial modeling, you should know about these both terms. What is dependent variable and independent variable? Dependent variable is your y, which is dependent on the changes occurred because of independent variables. So while financial modeling,
you do forecast and prediction about future course of action. So you had to ensure that decision that is based, that is taken based on various factors, various assumptions, is optimum and not arbitrary. Okay. So important component while doing financial modeling is dependent and independent variable. You should know what are your independent variables and what are your dependent variables. So independent variables are what? The regression equation that forms the basis of statistical modeling, forecast, and other predictions make use of dependent and independent variables. And in independent variable is what? Which can is that one can manipulate it, change it, and it varies to find impact on other independent variables. So these independent variables are also known as explanatory variables. Explanatory variables, why we call it these as explanatory variables? क्योंकि हम इनके बेसिस पे देखते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें कितना चेंज हुआ है. ओके, सो बेस्ड ऑन दीज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और यू कैन से दीज आर द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, कि ये इन वेरिएबल्स की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, इफ आई राइट इट हेयर, like you are doing a modeling, y is equal to a plus bx, तो यहाँ पे bx plus more than one independent variable है, तो by plus bz, तो यहाँ पे कितने independent variables हो गए आपके? 3 हो गए, x, y, z, right? तो because of changes in these independent variables, how much change is there in this dependent variable? Okay, so that you should know very clearly while doing financial modeling, ki how many the data you had collected, in that data how many variables are dependent and how many variables you are taking as independent. Okay, so why we, and these independent variables, why these are called explanatory variables? Because each variable is explaining that if for example x has point x, जब आप ये मॉडल रन करोगे और इसका जो वैल्यू आएगा bx का, that is for example मान लो I am writing it y is equal to ये a है slope plus bx is your 0.5 plus by की वैल्यू आती है 0.2 प्लस और bz की वैल्यू आती है 0.3. तो इसका मतलब है कि जो bx है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसमें 5%, 0.5% रेस्पॉन्सिबल है bx वेरिएबल इतने परसेंट के लिए, किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल में, कि डिपेंडेंट वेरिएबल y में bx की वजह से कितना चेंज आया? 0.5%. by की वजह से कितना चेंज आया? 0.2%. bz की वजह से कितना परसेंटेज चेंज आया? 0.3. मतलब bx, by, bz जो है, they are contributing this much amount of change in y. So this is about your model. ये आपका एक फाइनेंशियल मॉडल हो गया, ठीक है, स्टैटिस्टिकल मॉडल. और ये मॉडल में आपको पता होना चाहिए वेरी क्लियरली, यू शुड नो अबाउट व्हाट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड व्हाट इज योर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, नाउ here I had given example ki if one wants to measure the impact of calorie or weight gain, then here has he has to take intake of different foods so that one has different calories intake, its impact on the weight gain. So independent variable क्या होगा कि जो पर्सन है अगर वो मेजर करना चाहता है कि इम्पैक्ट जो है कैलोरी का वेट गेन पर कितना है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट फूड उसने लिए हैं, खाए हैं, तो उनमें क्या क्या, सॉरी, उनमें क्या क्या कैलोरी इनटेक का जो है इनटेक था वो कितने कितने परसेंट में था, वो देखिएगा. तो वो क्या होगा, इसमें डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट? तो यहाँ पे डिपेंडेंट जो वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये आपको आइडेंटिफाई करना है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पे? कैलोरी इनटेक. ठीक है, तो कैलोरी इनटेक डिपेंडेंट हो गया, बाकी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए. लाइकवाइज डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, इसी में
जो आपका वेट गेन हुआ है, दैट विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट होगा जो वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आपने जो खाए हैं, जिनमें कैलोरी इनटेक का आप डेटा लोगे. सो दिस इज द मॉडल यू विल do. So while financial modeling, there are various instances of dependent examples like impact of macroeconomic factors. While you are saying that there is an impact of macroeconomic factors on the stock prices, तो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है, इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई है, ये सब हो सकते हैं, और स्टॉक प्राइसेस आप अलग से निकालते हो. तो यहाँ पे जो आपका स्टॉक है, आप उस पे इम्पैक्ट देख रहे हो, तो स्टॉक विल बी योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की. बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, कितना परसेंट चेंज हुआ है स्टॉक प्राइस पे. बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन, चेंज इन इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन में इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, बिकॉज ऑफ दैट हाउ मच चेंज इज देयर इन stock price. So here these are your independent variables, and these stock prices is your dependent variable. Likewise, in science, if I say impact of carbon dioxide emission on climate change, note different variables can be used to measure the climate change. So climate change is what? Dependent or independent? Is dependent variable, and impact of carbon dioxide emission is your independent variable. So while you are doing financial model, dependent variables and what are your independent variables. Otherwise, your whole analysis will be wrong. Now, next is spreadsheet environment and its application. While when you had decided all the objectives, purpose, and on that basis, you had decided that this model you are going to apply based on this objective. You had collected the data, and you had based on that identified your objective, and on the basis of identified objective collected the data and segregate that data. And now you had decided the model also, that these are dependent variable, these are independent variable. Now the next step is what? Spreadsheet. On spreadsheet, how you would put that data. Okay, so what about that spreadsheet environment and its application? So spreadsheet are the very important and crucial part while you are doing financial modeling. By because it helps the management in decision making. So while using it, you have to take utmost care. Why? Because it is a dynamic, and its simplicity, while it's a dynamic, but its simplicity makes it quite popular among the users. So it consists of environment that consists of components like cells, grid, formulas, data analysis, data sorting, filtering, ग्राफ चार्टिंग, ये सब. ठीक है, तो अब यहाँ पे वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट बेसिकली एमएस एक्सेल या गूगल में जो हम एक्सेल की शीट देखते हैं, तो उसमें हमारे क्या क्या चीजें हमें दिखेंगी टैब में, कि हमें कॉलम्स हैं, रोज हैं, मेन्यू बार है, उसमें क्या क्या आइटम्स हैं, उन सबका क्या मतलब है, दैट यू शुड नो. तो ग्रिड स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिड स्ट्रक्चर का मतलब है कि रोज और कॉलम्स जो कि नंबर्ड हैं, लेबल्ड हैं नंबर और लेटर्स से, तो ये इजीली हेल्प करते हैं आपको आइडेंटिफाई करने में, रेफरेंसिंग में, जिससे कि आप फॉर्मूलाज को इजीली वहां पे शो कर सको. ओके, देन नेक्स्ट इज योर ग्रिड स्ट्रक्चर. जस्ट अ सेकंड. नेक्स्ट इज योर ग्रिड स्ट्रक्चर. Grid structure is basically okay, grid structure is basically what? Rows and columns, which are labeled with the numbers and letters. So it helps you to identify and do the referencing along with its useful application in different formulas. The next is different functions in cells, means you had the various ways in which you can enter the data in a particular cell. So
that data can be in the form of text, date, formulas that you had to select according to your convenience. So it's a comprehensive which allows application of different functions. Then next is formulas and functions. Cells in spreadsheet can be used to perform various functions. It not only helps in doing the complex calculations, but also it helps in assisting simple mathematical calculations. Okay, ये आपको manually नहीं करनी. By putting the formulas you can do that mathematical calculations very easy and simple way. Okay, then through charts and graphs जो है आप अपने data को visualize कर सकते हो in attractive manner, in very easy understandable manner through pie charts, bar graphs, charts. तो उनके through it's a facility available in the spreadsheet where you can visualize your data in the form of charts and graphs. It not only it helps in interpretation but also helps in better communicating the results. Then next is data sorting and filtering. It also helps Google spreadsheets and MS Excel spreadsheet in sorting the data. Sorting means कि अलग अलग data को अगर आपको compile करना है, similar data को एक साथ compile करना है, तो it helps in that sorting and filtering based on some specific criteria कि आपको कोई ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे सिलेक्टेड क्राइटेरिया आपको लेना है और उसके बेसिस पे आपको डेटा फिल्टर करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है. दैट यू कैन डू. सो डेटा sorting and filtering you can do. So that is about spreadsheet environment and its application. The next is designing the spreadsheet model. Spreadsheet designing is a very important and crucial step in while you are doing the financial modeling. Why? Because efficiency and accuracy in the designing would determine the overall output or overall result, overall analysis of your model. Okay, so while you are designing that spreadsheet model, it basically you had to design it with utmost care because whole of the result is based on that only. So while designing that spreadsheet model, what steps you had to follow? First is you had to define the objective of that model, why you are making that model. So very first step in designing spreadsheet is to you had to decide the objective, why you are doing that model, what was the purpose, whether it is a decision making or other, and on basis of that that objective, how you are going to attain it. Okay, the next is input and output. Means कि जो data आप enter करोगे sorry, the data जो भी आप जो नीडेड है उस एनालिसिस के लिए, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे दैट दिस डेटा इज नीडेड फॉर दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. इट मे बी इन फ्रीक्वेंसी, नंबर, एक्सटेंट, कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी है वो आपको एसेस करना है, देखना है, एंड then only you had to do the framing of your Excel spreadsheet. Okay, so second is your identify the input and output model. Then next is organize the data structure. Organize the data structure means कि अब जो डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है उसको स्प्रेडशीट में इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है एक ऑर्डरली मैनर में, so that it can be checked easily, it can be analyzed easily, and can be interpreted by anyone, those who are in need of it. Okay, so for this thing you can do step by step in different sheets, or you can do step by step in only one sheet. It depends upon you कि different tabs के through आप step by step अपना show कर दो या फिर in single sheet step by step you can show. So it depends upon the data कि how you are going to show it. Then after organizing the data while making use of different sheets or by making use of different tabs, then next step is to data validation and cleaning. Data validation and cleaning means कि जो data आपने spreadsheet में enter किया है, the data that you had entered in the spreadsheet, that needs to be cleaned for मतलब कि अगर उसमें कोई errors हैं that you had to clean. Okay, that you had to remove, हटाना है वहां से, अपडेट करना है उसको. तो जो भी डेटा आपने एंटर किया अगर उसमें कुछ भी एरर्स हैं दैट यू हैड टू रिमूव. अगर उसमें कुछ डुप्लीकेशन हुआ है दैट यू हैड टू रिमूव. omit अगर कुछ हुआ है that you had to enter, so that you can rely on that model. So data validation and cleaning is about that कि कुछ भी अगर एरर है, कुछ भी अगर omitted है या फिर कुछ duplication हुआ है, those things you had to take care of, those things you had to
update. The next is incorporating assumptions. Incorporating assumptions means फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब आप फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो तो कोई भी मॉडल जब आप बनाओगे तो उसकी कुछ assumptions होती हैं that are far from reality. So financial modeling is based on those assumptions. So those assumptions that you had uh, done while deciding the model, तो वो assumptions आपको incorporate करने हैं, डालने हैं in the formulas of spreadsheet, that these are the assumptions while doing that modeling. Okay, so model should be transparent about those assumptions. That assumptions, why? Because it enhances the understanding and credibility of that model. The next is building formulas. Building formulas means कि जो models आपने spreadsheet में बनाए हैं, that model in spreadsheet are based on formulas. So those formulas are needed to be incorporated in that spreadsheet. कि जो भी formulas आपने उस स्प्रेडशीट में मॉडल्स के लिए उस मॉडल को रन करने के लिए बनाए हैं, तो वो फॉर्मूलाज उस स्प्रेडशीट में आपको शो करने हैं. और शो कैसे करने हैं? वेरी क्लियरली. इट शुड बी लॉजिकल एंड डिवॉइड ऑफ एरर्स, कि उनमें कोई एरर्स ना हो, सो दैट जो डिफिकल्ट कंप्यूटेशंस हैं, दैट मान लो फॉर्मूलेज में अगर बहुत लंबा फॉर्मूला है तो डिफरेंट कैलकुलेशंस जो हैं उस फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, तो ईच कैलकुलेशन शुड बी designed in such a way that is understandable in very easy language. It should be divided into various smaller and doable stages. Okay, the next is develop user friendly interface. As modeling involves collaborations among different people, different agencies, तो जो spreadsheet है that should be very user friendly, so that each and every person who is in need of it, they had ease of making changes in it. They can do amendments or updates in it and understand the execution of that spreadsheet. Okay, तो अगर मान लो Google sheet है या Excel sheet है and that is used by various स्टेक होल्डर्स, कि वो लोग भी उसमें कुछ अपडेशन करें या फिर उनका भी कुछ काम है. जैसे कुछ हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिनपे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो कि कई डिपार्टमेंट्स मिलके बनाते हैं. तो वो जो रिपोर्ट है ऐसे बनाई जाए, ऐसे उस वो मॉडल बनाया जाए कि जो हर डिपार्टमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, वो हर डिपार्टमेंट उसको पहले तो इजी तरीके से समझ सके और उसमें अगर उसे लगता है कुछ चेंज करना है, कुछ अपडेट करना है, तो वो उसको अच्छे से कर सके. सो यूजर फ्रेंडली का मतलब ये कि जो भी मॉडल आप बना रहे हो तो वो मॉडल इस तरीके से स्प्रेडशीट में दिखाओ, उस तरीके से उसे क्रिएट करो जो जो भी लोग उससे अटैच्ड हैं, जो उसमें डिसीजन मेकिंग में रहेंगे उस मॉडल के, वो उसमें आराम से उसको बिना इन्वॉल्व हुए जो लोग बना रहे हैं उस मॉडल को उनके साथ बिना इन्वॉल्व हुए ऐसे लोग भी उसमें चेंजेस कर सकें कि वो इजिली पहले तो उनको अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें चेंज कर सके और उसको समझ सके. Then next is testing the model. Testing the model is the last step कि जब आपका मॉडल बन जाता है, it's a user friendly, everything you had done. It is the last stage that designing the spreadsheet model to test it. कि अब आप उसको टेस्ट करोगे और उसका फीडबैक डिफरेंट यूजर से लोगे और अकॉर्डिंगली यू कैन मॉडिफाई इट बिफोर पुटिंग इट इनटू द एक्चुअल यूज. कि अब उसको एक्चुअल यूज में डालने से पहले क्या करना है? पायलट टेस्टिंग करनी है, जिससे कि आपको उसका फीडबैक मिल सके मॉडल का, उसमें अगर कुछ कमी है तो वो आप अपडेट कर सको और ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक उसको मॉडिफाई कर सको, जिस और लास्ट में उसको फाइनली आप रन कर सको, एक्चुअल यूज में ले सको. Okay, so this was about financial modeling unit first. Now, this is the illustration of my Microsoft Excel and Google Sheets. कि जब आप Microsoft Excel open करोगे, तो that this screen will appear in which you should know every part, that this is the search bar, this is the title bar, here is your quick assets toolbar, here you can put your formulas, जो भी आप cell में formula लिखोगे, that is being displayed here. Then this is your active cell first जिसमें आप work करोगे, this is the ribbon, then column header, then this is the zoom slider and page view buttons. ये आपका स्प्रेडशीट का वर्क एरिया है जहाँ पे आप सारा काम करोगे. These are the rows, these are the columns. Okay,
कॉलम हेडर एंड दिस इज योर शीट टैब्स। ओके, जो नीचे है आपके यहाँ पे शीट 1 लिखा है, दिस इज द शीट टैब। जब आप एक्सेल शीट में अपनी जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की रिपोर्ट्स बनाते हो, डेटा इनपुट करते हो, तो आप उसे ब्रेक कर सकते हो अलग अलग शीट्स में स्टेप बाय स्टेप, या फिर इसी शीट में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आप शो कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट योर एक्सेल शीट। Then this is about your Google spreadsheet. Google spreadsheet is something different from the Excel sheet, where you have spreadsheet title, Google Sheet. Then these are the menu bar. This is your toolbar. Here you can share it to the people who are whom you want to share with it. Your financial modeling Excel sheet. Then these are the columns. These are the rows. This is the active cell in which you are working. Worksheet, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Number of worksheets you can add. Okay, so this is the pro forma of your Google Sheet. So this was about your first unit. Now unit second, introduction to financial statement modeling. Okay, just I'm taking 5 minutes break and then we will proceed to the financial statement modeling. Okay.
Okay, class. So Unit 2, Introduction to Financial Statement Modeling. Basically, in this, we will modeling for business analysis. We will study what is building financial statement models, then financial analysis of a company, then construction of pyramid of ratios from the published statements, then or published financial statements, then how to report it on a industry. So financial analysis and interpretation regarding it. So first of all, introduction to financial statement modeling. In financial statement it involves creating projected financial statements. It includes your income statement, balance sheet and cash flow statement to analyze company's future performance. Okay, तो जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग की बात करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं on the basis of income statement, on the basis of balance sheet, on the basis of cash flow statement, जिससे कि हम एनालाइज कर सके कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस को. इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, वैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग. Or spreadsheets like Microsoft Excel basically is widely used in financial modeling due to their flexibility and computational capabilities. Now, what are the key components of financial statement modeling? First is income statement modeling. जब हम फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करते हैं तो ऑन व्हाट बेसिस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स लेते हैं जिनके बेसिस पे हम मॉडलिंग करते हैं. पहला है इनकम स्टेटमेंट, जिसमें से हम रेवेन्यूज, कॉस्ट और नेट इनकम कंपनी की प्रोजेक्ट करते हैं. बैलेंस शीट में से हम फोरकास्ट करते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी को. कैश फ्लो स्टेटमेंट मॉडलिंग में हम प्रेडिक्ट करते हैं कितना कैश फ्लो है, कितना कैश इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है. कैश फ्लो में इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं कैश का कि वो कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है. तीन कैटेगरीज में देखते हैं हम, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग. ऑपरेटिंग में कितना हुआ, इन्वेस्टिंग में कितना हुआ और फाइनेंसिंग में कितना इनफ्लो एंड आउटफ्लो हुआ है. इसके बाद इन तीनों को हम लिंक करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं और उनकी कंसिस्टेंसी देखते हैं. सो लिंकिंग थ्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड देन वी डू द सिनेरियो एनालिसिस. कि सिनेरियो एनालिसिस मींस कि डिफरेंट अजम्पशंस हम बनाते हैं उस मॉडल से रिलेटेड और हर अजम्पशंस में हम देखते हैं कि अगर ये अज्यूम किया कि अगर इतना प्रॉफिट, इतना सेल्स होगा तो उसका प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट होगा. तो वो इम्पैक्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन दोज अजम्पशंस कि कितना उनका इम्पैक्ट है प्रॉफिट पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कंपनी के. ओके, so that scenario we will test. So these are the key components while you are doing financial statement modeling. Okay. Now just a second, just a second. Okay, then next is key components. After that, what are those key components? Then now steps in financial statement modeling. अब कैसे आप financial statement modeling में क्या क्या steps you had to follow? First is you had to collect all the historical data. Ma'am, please share the screen. Okay. Oh, I forgot. Sorry. Just a second. My screen is visible. Is the screen is visible to everyone? Please write it fastly. Okay. Okay, Kavita. अच्छा बच्चों, अभी तक यूनिट फर्स्ट का सब समझ आया है? एनी डाउट रिगार्डिंग योर फर्स्ट यूनिट? लेट मी नो. रशिका, सरोज, कविता, वरुण. Unit first is understandable to everyone? Okay. Okay, then we will proceed to the second unit fastly. Okay, so unit second, it's about modeling for business analysis, in which we study about how to build the financial model,
how introduction about it first of all, then what are the key components regarding it, what key components you had to consider, and what are the steps while you are doing the financial statement modeling. Okay, so introduction to financial statement modeling, basically in this it involves creating projected financial statements based on your income statement, balance sheet, and cash flow statement. Okay, income statement, balance sheet, you all know, assets and liabilities data you do have, and in cash flow statement you know information about the inflow of cash and outflow of cash, means cash flow of cash, whether it's inflow or outflow from the business. Okay, so that on that statements basis or accounts basis you are doing the projecting the financial statements, which helps in forecasting, valuation, and for decision making. And you do it through the MS Excel spreadsheets, Google Sheets. And why you are doing it? Because it is easy and flexible. You can do the computational activities very easily there. Now, what are the key components while doing financial statement modeling? Income statement through balance sheet and cash flow statement. These are the three main components from which you are getting your data, and on that basis you are doing the analysis. Okay, by linking all the data from these three statements. In cash flow statement, you all know it is being divided into three categories. First is your operating activity, cash flow from operating activities, then cash flow from investing activities, and cash flow from financing activities. So on the basis of that, you do the financial modeling on the on basis of these three statements: income statement, balance sheet statement, and your cash flow statement. You do extract the data, and on that basis you do the analysis. Then scenario analysis is what, कि जो भी आप मॉडल बनाते हो उसमें कुछ assumptions लिखते हो, जैसे कि y is equal to a plus b, y is equal to a plus bx. So x is if there is a change in x, there is a change in y. Okay, how much change in y because of change in x? तो वो जो change है, that is based on some factors, and those factors are your assumptions कि if this event will happen, this will there will be change in x variable, and because of that there will be change in y variable. So like that scenario analysis, what you are doing, you are testing the impact of various assumptions on that financial performance. कि अगर ये assumption है कि इसकी वजह से profit में कुछ होगा, तो वो जो assumption है उसका अगर positive impact है, तो there will be a positive impact in profit. If that assumption has a negative impact, that is having negative impact on that. तो उसके basis पे कि assumptions के basis पे उनके change, assumptions के basis पे जो change है उसका क्या impact होगा financial performance पे, that is your scenario analysis. Now steps in financial modeling. First, you had to collect the historical financial data and relevant information. Then you had to develop the assumptions regarding that financial data कि आपका revenue growth इतना है, costing इतना है, cost structure, capital expenditure इतना होगा, right? So these are your assumptions based on that financial statement. Then you build your income statement, balance sheet, and cash flow statement models, and then link the statements so that you can ensure the consistency and conduct the scenario and sensitivity analysis. Scenario I already had explained कि जो आप revenue growth का assumption ले रहे हो कि revenue growth will increase up to that time period. If there is no event occur that is very effective. Okay, there is a no change in cost structure, but in reality if I say no assumptions are true कि अगर हम कहें कि कॉस्ट स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा अगले 5 साल तक, तो ऐसा तो रियलिटी में इफ आई से इट इज नॉट ट्रू, देयर मे बी चेंज इन द कॉस्टिंग कि आप जो रॉ मटेरियल मंगाते हो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेबर्स को जो पे करते हो उनकी कॉस्टिंग में चेंज हो सकता है, बट व्हेन यू आर डेवलपिंग एनी मॉडल तो आप कुछ assumptions लेके चलते हो दैट आर रेलेवेंट फॉर दैट मॉडल. तो जो assumptions है उन assumptions में अगर कुछ change आता है तो then on that basis what are the change in the performance of company that you have to analyze. That is your scenario analysis कि इस scenario में कि अगर cost में इतना change हुआ तो उसकी वजह से financial performance पे कितना change होगा. That is your scenario analysis. So these are the steps. Then financial statement techniques कि आप किन किन techniques से इनको analyze कर सकते हो. पहला है horizontal analysis. हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में आप क्या करते हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको कंपेयर करते हो अलग अलग टाइम पीरियड के बेसिस पे. ओके, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स ऑफ दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप
ट्रेंड एनालिसिस भी बोल सकते हो या फिर कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम बोलते हैं. क्यों? Why? Because it involves major financial statement indicators and ratio of same company over multiple years or multiple periods. It helps you to identify the trend, percentage change in line items compared to बेस ईयर और प्रीवियस ईयर. कि आपने किसी एक ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस मान लिया और उस बेस ईयर को लेके आप अदर ईयर्स के साथ कंपेयर कर रहे हो कि इतना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज को लेके इतना था स्टैंडर्ड और अब नेक्स्ट ईयर में इतना चेंज हो गया. तो वो चेंज क्या है, वो पैटर्न क्या है अगले 5 साल के लिए. तो वो जो पैटर्न है या उसमें जो परसेंटेज चेंज है वो कितना है, आप उसको कंपेयर करते हो बेस ईयर के साथ और फिर देखते हो कि कितना चेंज हुआ है. तो एक पैटर्न आपको पता चलता है ग्रोथ का रिलेटेड टू द आइटम दैट यू आर सर्चिंग, कि उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, परसेंटेज चेंज हुआ है, वो पैटर्न कैसा है, स्ट्रेट लाइन है या देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन दैट. ओके, सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. और इसको करने के लिए आपको क्या करना है, पहला स्टेप है कि आप एक बेस ईयर सेलेक्ट करोगे जो भी एनालिसिस पीरियड है उसमें से. एनालिसिस पीरियड मतलब अगर आप 10 साल का डेटा लिए हो तो उस 10 साल में आपको एक साल को बेस ईयर मानना है कि उस बेस ईयर के बेसिस पे, उस ईयर के बेसिस पे आप चेंजेस देखना चाहते हो पहले 5 साल या पिछले 5 साल में. मान लो फ्रॉम 2010 टू 2024 ये आपने डेटा लिया है एनालाइज करने के लिए और आप देखना चाहते हो कोविड वाला जो ईयर है उसको आपने बेस ईयर लिया कि कोविड से पहले और कोविड के बाद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इस कंपनी के क्या इफेक्ट हुआ है ना. तो बेस ईयर इज दैट कि कोई इवेंट अगर हुआ, रेसेशन हुआ, जैसे सत्यम एंटरप्राइजेस वाला केस हुआ था तो उस ईयर को आप बेस लेके कोई एक ऑब्जेक्टिव अपना देख सकते हो कि बिकॉज ऑफ दैट केस और दैट इवेंट व्हाट वर द changes in the financial position of particular industry, right? So that base year you had to select. Then for each subsequent year you had to calculate the percentage change. और percentage change basically आप कैसे calculate करते हो, current year value minus base year value whole divided by base year value. Okay, current year minus previous year upon previous year. कि जो आपका previous year क्या है, base year जो है, तो उसमें से करंट वैल्यू लेस करोगे और उसी बेस ईयर से आप उसको पूरे को डिवाइड कर दोगे जो आपकी ये वैल्यू निकलेगी. उसके बाद ईयर ऑन ईयर परसेंटेज चेंज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. उसके लिए क्या है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू अपॉन प्रीवियस ईयर. अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, अगर पॉजिटिव परसेंटेज चेंज है तो इसका मतलब इंक्रीज है और नेगेटिव है तो डिक्रीज है कंपेयर टू बेस ईयर. दिस वाज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. वर्टिकल एनालिसिस को आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बोलते हो. इसमें क्या करते हो, हियर यू एक्सप्रेस ईच आइटम इन द फॉर्म ऑफ Am I audible to everyone? Okay, so this was about your vertical analysis. Expressing, okay, vertical analysis is means कि expressing each item as a percentage of base value. जैसे कि sales for income statement या total assets में आपने क्या किया, उसको as a percentage, as a base value माना in balance sheet for example total assets, और उसके base पे आपने सारी चीजें calculate की. So इसको हम common size statement या component percentage analysis भी बोलते हैं. And it is expressed as each item of financial statement as a percentage of another major item belonging to same statement. For the income statement, each item is expressed as percentage of sales or revenue. And for balance sheet, it is expressed as a percentage of total assets or total liabilities. And it helps to assess how each item is contributing to the total and it's in relation.
to or you can say in relative proportion वो कितना contribute कर रहे हैं. And basic purpose how it is being useful to the organization, it is useful for comparing financial statement composition of different companies or same company over the time. And for conducting vertical analysis, what you had to do for income statement, first of all, you had to divide each line item by the total sales or revenue for that year. And for balance sheet, what you had to do, you had to divide asset item by the total assets and liability or equity items by total liabilities or equity. Then you had to do the analysis. Now, next is ratio analysis. While doing this, horizontal financial statement analysis techniques we were discussing कि आप horizontal analysis कर सकते हो, vertical कर सकते हो. Now next is your ratio analysis. Through ratio analysis also you can do the analysis. यहाँ पे आप क्या करोगे, different types of ratios you will calculate so that you can assess the financial performance of that company. अब various ratios आपके किस किस basis पे हो सकते हैं कि आप liquidity देखना चाहते हो company की, तो liquid asset ratio, asset test ratio ये देख सकते हो. Profitability के लिए आपके होते हैं ratios, solvency, activity turnover ratio, market value के लिए earning per share कितना है, dividend per share कितना है, एक्टिविटीज और टर्नओवर से रिलेटेड की डेटर्स टर्नओवर कितना है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, राइट. तो ये सारे रेशियोज के थ्रू आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जज कर सकते हो, देख सकते हो, एसेस कर सकते हो किसी भी कंपनी की. सो दीज आर द टेक्निक्स यू कैन यूज. नाउ नेक्स्ट इज योर ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, दैट इज योर pyramid of ratios. Pyramid of ratios are basically also known as the DuPont analysis, and it is a financial analysis technique. What is being done here? You break down a company's return on equity into three main components. Okay, जो कंपनी का रिटर्न होता है और इक्विटी को, उसको आप तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो, जिससे कि आप ये अंडरस्टैंड कर सको कि what are the main factors that are driving the company's profitability and return on shareholders investment. Okay, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न को बढ़ाने में, ठीक है, उसको इंक्रीज करने में, शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट पे. तो वो तीनों फैक्टर्स कौन कौन से हैं? नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर एंड फाइनेंशियल लेवरेज. अब इन तीनों का मतलब क्या है? ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, पिरामिड ऑफ रेशियोज में ये तीन मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में, ठीक है. बेसिकली इससे पहले मैं ये चीज डिस्कस करूं आपको ड्यूपॉन्ट एनालिसिस का, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने रखा है, यस, इसका एक कॉन्सेप्ट बता दूं, फ्रॉम वेयर इट हैज emerged एंड हु हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट, और इसमें किस तरीके से आप एसेस कर सकते हो फाइनेंशियल जो कंडीशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की. इट वाज गिवन बाय फ्रैंक डोनाल्डसन ब्राउन विद द फ्रेमवर्क. उन्होंने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया बाय डिवाइडिंग द रिटर्न ऑन इक्विटी इन थ्री पार्ट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन एसेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ दैट कंपनी, of any company. So a man named Frank Donaldson Brown came up with this framework, which nicely decomposed the company's ROE into constituent parts, which are very informative in and of themselves. So his name was Frank Donaldson Brown, and on his name, this DuPont analysis was named as DuPont model or DuPont's pyramid, and it is very much used in current period by the financial analyst. Why? Because by decomposing one of the most important ratios of any business, it provides a clear, comprehensive view in its financial statements. अब इसमें कैसे ये वर्क करता है, that we will study first. It start by decomposing return on equity into key components. इस तरीके से अगर आप इस मॉडल को देखोगे, it looks like this. Okay, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी को तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है. नेट इनकम एवरेज टोटल इक्विटी इज इक्वल टू नेट इनकम इंटू एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज टोटल इक्विटी इंटू एवरेज टोटल एसेट्स इज इक्वल टू आरओई, एवरेज टोटल इक्विटी, नेट इनकम, इस तरीके से, ठीक है. जस्ट अ मिनट. यहाँ पे बेसिकली ये जो सारा इनटू करके बताया कि जो आपका नेट इनकम एवरेज टोटल एसेट्स इनटू एवरेज टोटल इक्विटी एंड रिटर्न ऑन एवरेज इक्वल रिटर्न ऑन दिस
एवरेज टोटल एसेट्स, नेट इनकम, एवरेज टोटल इक्विटी, एवरेज टोटल एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स, ऑल एसेट्स इनटू लेवरेज। तो जो 3 कंपोनेंट्स हैं उसी में ये फॉर्मूला पूरा डिराइव हुआ है। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू कि कैसे ये डिवाइड हुआ, कैसे हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, यस, कि पहला है नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और फाइनेंशियल लेवरेज, 3 में डिवाइड किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनकी जो इक्विटी है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है कंपनी को। ठीक है, तो वो इक्विटी रिटर्न जो है उसमें 3 कंपोनेंट्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर एंड फाइनेंशियल लेवरेज। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ, ये रेशियो शो करता है कि कितना नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया अपनी सेल्स और रेवेन्यू से, और उसको नेट इनकम को कैलकुलेट करते हैं हम डिवाइड करके उसकी टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू से। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय, और नेट इनकम क्या होती है आपकी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से आपने टैक्स भी लेस कर दिया तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। उस नेट प्रॉफिट में से आप उसको डिवाइड करोगे टोटल सेल्स या रेवेन्यू से, तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का नेट इनकम $1 लाख है और उसका टोटल सेल्स इज मोर देन इट, तो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। ओके, तो नेट इनकम जो है इतनी है, सेल्स इतनी है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन वुड बी जो आपका नेट प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दोगे आप टोटल सेल्स से। ठीक है, तो 10 लाख सेल्स है, 1 लाख आपका नेट इनकम है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, तो 10%, 0.10 विल बी आंसर, तो परसेंट में 10% होगा, तो दिस इज योर नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर ये नेट प्रॉफिट मार्जिन हाई है तो इसका मतलब है जो कंपनी है वो बहुत अच्छे से, उसका मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से अपनी चीजें मैनेज कर रही है और एफिशिएंट है अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने में और प्रॉफिट्स जनरेट करने में। ठीक है, अदरवाइज वाइस वर्सा, अगर वो नेट प्रॉफिट कम है तो इसका मतलब उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, वो अपने सेल्स ज्यादा नहीं कर पा रहे, उनका प्रॉफिट ज्यादा नहीं है। द नेक्स्ट इज योर एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो बेसिकली मेजर्स कि कितनी इफिशिएंटली कंपनी जो है अपने एसेट्स का यूज कर रही है जिससे कि वो अपने सेल्स को इंक्रीज कर सके, रेवेन्यूज को जनरेट कर सके। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, जो भी कंपनी का टोटल एसेट्स हैं, कंपनी के टोटल सेल्स इतना है, टोटल एसेट्स इतना है, तो एसेट टर्नओवर हो जाएगा जो टोटल सेल्स है दैट इज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। जब भी हम टर्नओवर वर्ड की बात करते हैं, जब भी हम रेशियोस कैलकुलेट करते हैं, ये एक तरीके से रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो जहां भी वर्ड टर्नओवर आएगा दैट इट मींस इट इज अ नेट सेल। ओके, तो एसेट टर्नओवर में एसेट्स जो तो टोटल एसेट्स हैं उसका हम किसके साथ रिलेशनशिप देख रहे हैं, टोटल सेल्स के साथ, और टोटल सेल्स क्या है आपका, टर्नओवर। तो यहाँ पे एसेट्स टर्नओवर मतलब जो आपके टोटल एसेट्स हैं उनका सेल्स के साथ रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, सेल्स टर्नओवर रेशियो है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आप कैलकुलेट करते हो, जब रेशियोस कैलकुलेट करते हो तो क्रेडिटर्स प्लस टर्नओवर है, तो मतलब क्रेडिटर्स का नेट सेल्स के साथ आप रिलेशनशिप देखोगे, ऐसे ही डेटर्स का नेट सेल के साथ रिलेशनशिप देखोगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, एसेट टर्नओवर, तो एसेट का सेल्स के साथ देखोगे, क्रेडिटर्स का सेल्स के साथ देखोगे। तो यहाँ पे एसेट टर्नओवर का देखा तो आपका है 2, तो हाईएस्ट अगर ये एसेट टर्नओवर रेशियो, तो इसका मतलब है कंपनी इज एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग इट्स एसेट्स टू जनरेट द सेल्स, की कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो अपने एसेट्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है जिससे उसको सेल्स अच्छे से जनरेट हो रहे हैं। नाउ फाइनेंशियल लेवरेज, what it shows, this financial leverage ratio shows कि जो कंपनी है वो कितना डेट ले रही है और कितना इक्विटी ले रही है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। ओके, तो हाउ मच कंपनी इज रिलाइंग ऑन डेट फाइनेंसिंग कंपेयर टू इक्विटी फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे हम कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं उनको डिवाइड करते हैं टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से, जिससे कि हम उसका फाइनेंशियल लेवरेज ये देख सकें कि कितना फाइनेंसिंग उसने डेट का लिया है और कितना इक्विटी का फाइनेंसिंग लिया है। और अगर ये लेवरेज रेशियो जो है कंपनी का हायर आता है तो इसका मतलब है कि जो कंपनी का कैपिटल उसने गैदर किया है दैट इज मोर फ्रॉम डेब्ट फाइनेंसिंग, नॉट फ्रॉम इक्विटी फाइनेंसिंग। इसका मतलब जो रिटर्न्स होंगे वो भी वो जो रिटर्न्स होंगे दैट इज एम्पलीफाइंग वर्ड, कि जो रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो डोपंट एनालिसिस में हम इन तीनों कंपोनेंट्स का क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, कंबाइन करते हैं और उसके बेसिस पे हम
निकालते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को यहाँ पे इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर एंड फाइनेंशियल लेवरेज। नेट प्रॉफिट आपको अच्छे से बताया कि नेट प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और कैसे आप एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करोगे। इनका इंटरप्रिटेशन बता दिया कि अगर आपका नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा आता है तो इसका मतलब है इफिशिएंटली कंपनी मैनेज कर रही है अपने एसेट्स को, सॉरी कंपनी, यस, सेल्स को और एसेट्स को, एसेट टर्नओवर रेशियो एंड फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, कि कंपनी का जो फाइनेंसिंग है वो कैसा है। देन नेक्स्ट इज in dew point analysis, you divide this ROE into these 3 components, and this formula, what it shows company's return on equity is driven by its net profit margin, its asset turnover, and extent to which it rely on the debt financing। ठीक है, कि कितना efficiently कंपनी जो है अपना प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रही है बाय यूजिंग एसेट्स, efficiently using assets, and how much extent it is having the debt financing. So by breaking down the return on equity in these 3 components, dew point analysis, what it do, it helps to identify the strength and weakness of the company's performance. It allow the investors, managers to pinpoint the various important specific areas for improvement, such as increasing the profitability, or they had to optimize the assets utilization, कि वो assets का अच्छे से utilization करें अगर asset turnover ratio अच्छा नहीं है, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो बहुत ज्यादा है तो उसको सही करें, बिकॉज ऑफ दैट देयर आर नो प्रॉफिट। ओके, so dew point analysis, and earlier it was divided into 3 parts, but it can further be extended into 5 component model by breaking down net profit into एडिशनल फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें पहले मेन थ्री फैक्टर्स में हमने रिटर्न ऑन इक्विटी को डिवाइड किया था। अब क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी में जो 3 फैक्टर्स है उनमें जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था उसको डिवाइड कर दिया है again into many factors like tax burden, interest burden and operating profit margin, कि टैक्स बर्डन कितना है, कितना इंटरेस्ट पे आउट करना है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसका कितना मार्जिन है उसमें। तो ऑन दैट बेसिस it will provide companies detailed companies profitability analysis on companies profitability and return on equity। Okay, so this was about dew point analysis। Okay, the next is, it can be as I have said, can be further extended into 5 component model, and then you can assess the profitability and return on equity। So we can say that at last what it is, it breaks down return on equity in the 3 component: net profit margin, asset turnover and financial leverage, and it provides insights into drivers of profitability and return on investment। And before getting into this, just a second. These were the steps you can calculate it. Yes, this I want to explain in dew point analysis. Like this, return on equity is divided into net profit margin and equity turnover. Net profit margin is your net income divided by revenue, and equity turnover is your revenue divided by average equity. Okay, then this is being divided into net profit, that is net profit margin, but equity turnover is divided into asset turnover and financial leverage. These are the 3 main components that I had discussed. कि net profit margin, that is net income divided by net income divided by revenue. Then asset turnover is your revenue divided by average assets. Then financial leverage ratio is average assets divided by average equity. Then it can be divided again, these 3 components can be divided into 5 components. Net profit margin is divided into tax burden, interest burden, operating profit margin, and asset turnover remains same and financial leverage remains same। Okay, तो ये equity turnover को asset और financial में ही रख सकते हो, और net profit is again divided into 3। Okay, so this 5 component model or this 3 component model you can use for doing the dew point analysis. And what are the limitations of it? Now, limitations of dew point analysis are
कि similar to other ratios, it is only as good as the data that go into it. कि अगर आपने data सही से input किया है, then only you can get the right calculations and reliable calculations and results. So accounting treatment of these certain expenses like different cash flow methods, capitalization of interest, etc., can distort numbers that forms the ratios. Therefore जो analyst हैं, they should be very careful while making the necessary adjustments in comparing two companies. Okay, so this is not unique to dopant analysis. It can be stated for other financial analysis methods also. So limitations is that कि उनको एक utmost care or they should be professional. Second is dopant analysis doesn't reveal why certain ratios are very higher or lower, even if they should be considered high or low per se. Okay, so it is also limitation what drives a company's ROE or what could be the long-term implication of this, and should its management focus on its effort on cost control, asset management, or debt burden. So this was about dopant analysis. Then next is, after that, okay, pyramid of ratios. That's why जैसे मैंने figure दिखाया आपको, that's why it is also known as a pyramid of ratios. Then next is industry analysis. Industry analysis, what it means, just a second, out. Industry analysis involves studying and evaluating the financial performance and key indicators of the major companies operating within that specific industry. Okay, तो industry analysis में हम क्या करते हैं, financial information को जो है study करते हैं, evaluate करते हैं, और उसके जो कि indicators हैं major companies के जो कि operate कर रहे हैं उस specific industry में, उनको identify करते हैं, जिससे कि इंडस्ट्री का जो लैंडस्केप है उसके ट्रेंड हैं, बेंचमार्किंग है कंपनी के परफॉर्मेंस की अगेंस्ट इट्स पीयर, उसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट हम वो सब देख सकें, एसेस कर सकें. तो detailed explanation in easy language about industry analysis is what? Gathering data. पहला step है in industry analysis is what? To collect the financial data of major players or companies within that industry, and that data is typically what? It includes your financial statement, key ratios, performance indicators, data like sales growth, market share, profitability, and stock prices. Then after gathering or collecting the data, what you had to do, you had to calculate the industry average. Means once the data is collected, various financial ratios or performance matrices you had to calculate, and the averages, जो भी आप फाइनेंशियल रेशियोज या एवरेजेस कैलकुलेट करोगे, दे आर टेकन बाय द अरिथमेटिक मीन determined by taking the arithmetic mean, that is your average of the corresponding values of all companies in the industry. For example, जैसे कि there are 4 major companies in an industry with net profit margin of 15, 18, 20 and 22%. तो industry का average net profit margin what would it would be? 15% plus 18 plus 20 plus 22% divided by 4. Why? Because 4 companies are there. तो आपका average आ गया 18.75%. तो आपको industries का average निकालना है, on an average you has to see that this is the performance, and on that basis you can compare. Then third is benchmarking. I'm discussing about this in relation to industry analysis. So first of all, you had to gather the data, then you had to calculate the industry averages. After that, you had to set the benchmark on the basis of industry's average. Okay, so after calculating industry average, what you had to do, a company's individual performance can be benchmarked against those industry's averages, which involves comparing company ka ratios and matrices with the industry average to assess its relative position for with that industry, कि आप ये जान सको कि उसका position क्या है in relation to that industry. इसके अलावा फॉर इंस्टेंस मान लो कि अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% है और इंडस्ट्री का एवरेज आ रहा है 18.75%, तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंडस्ट्री एवरेज से अबव है. ओके, इतना होना चाहिए था 18.75,
बट कंपनी का कितना है 20% है। तो जो आपने एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट किया 18.75, उससे ज्यादा है कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी इज अबव एवरेज, अबव एवरेज मतलब अबव इंडस्ट्रीज एवरेज वैल्यू। तो बेंचमार्क आप सेट कर सकते हो। देन आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि ये जो बेंचमार्क है इसके बेस पे यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ दैट इंडस्ट्री in relation to its competitors, and you can identify the areas where the company's ratios are significantly higher or lower, कि कहाँ कहाँ पे कंपनी के ratios high हैं, low हैं, और industry average से below हैं, so that you can find out the reasons why they are below, if they are below, और अगर ज्यादा है तो क्यों है, और ज्यादा है तो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी का टर्नओवर रेशियो जो है वो इंडस्ट्री एवरेज से बहुत कम है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहीं आपका जो इंडस्ट्री का स्टॉक है वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया। ऑब्सोलीट मतलब आउटडेटेड तो नहीं है, यूज में ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जो है एवरेज बहुत हाई है टर्नओवर का। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो लो है बहुत, जो इंडस्ट्री एवरेज है उसके कंपैरिजन में, तो वो लो है। तो इसका मतलब उस कंपनी के पास जो स्टॉक है वो ऑब्सोलीट तो नहीं हो गया। अगर ऑब्सोलीट है तो उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो रीजंस आइडेंटिफाई करना। देन नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मींस कि इंडस्ट्री एनालिसिस जब आप करते हो तो इट आल्सो फैसिलिटेट्स कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। हाउ? बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल कंपनी विद द इंडस्ट्रीज, के एक इंडिविजुअल कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है इन कंपेयर टू द इंडस्ट्री। इससे जो कंपनीज हैं उनकी जो रियल कंडीशन है, रियल परफॉर्मेंस है, वो रिवील होती है। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, की कंपनी का कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, एफिशिएंसी कैसी है, मार्केट वैल्यूएशन कैसी है, अगर वो मार्केट वैल्यूएशन अच्छी है या फिर बेकार है तो वो क्यों है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। देन नेक्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस। इन एडिशन टू द बेंचमार्क सेट अगेंस्ट द इंडस्ट्री एवरेज, की ये इंडस्ट्री एवरेज का बेंचमार्क है, उसके अलावा भी कंपनी एनालिसिस, जो ट्रेंड एनालिसिस है उसके थ्रू जो कंपनी है वो देख सकती है कि जो वेरियस रेशियोज हैं या मैट्रिसेस जो उन्होंने कैलकुलेट किए उनका ट्रेंड कैसा रहा है। ट्रेंड मतलब कि जब आप ग्राफ में प्लॉट करते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो जब एक्स एक्सिस पर जो डेटा है और वाई पे जो है उसको जब आप प्लॉट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन अगर फॉर्म होती है, देन इट मींस कि वो ट्रेंड शो हो रहा है। मान लो सेल्स आपका एक्स एक्सिस पर है और ईयर आपके वाई एक्सिस पर है, या वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस पर आपके ईयर है और वाई एक्सिस पर सेल्स का डेटा है, और वो एक अपवर्ड ट्रेंड में एक लाइन शो होती है अपवर्ड पोजीशन में, तो इसका मतलब वो जो ट्रेंड है उसका वो क्या है, अपवर्ड है। और अपवर्ड का मीन्स है कि ईयर बाय ईयर वो इंक्रीज होती गई है सेल्स, ठीक है, तो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो वो एक ट्रेंड आपको सेल्स का पता चलता है। लाइकवाइज अगर आप इंडस्ट्री के एवरेजेस का बेंचमार्क कर लो कि इतना होना चाहिए, और उसका ट्रेंड एनालिसिस देखो, जो रेशियोज आपने कैलकुलेट किए कि वो अपवर्ड ट्रेंड में, डाउनवर्ड में, उनका क्या ट्रेंड रहा है, उसमें फ्लक्चुएशंस रहे हैं या एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई है, तो वो ट्रेंड आप देख सकते हो, जिससे कि आपको पता चलता है ओवरऑल डायरेक्शन उस इंडस्ट्री की, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ का, उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, दैट यू कैन आइडेंटिफाई। Then strategic decision making, the insights that you had gained from the industrial analysis will help you to make the decisions while regarding the industries while you are doing the operating things. Okay, so you can perform the strategic decision making processes for the companies operating within that industry. So companies can use information to develop their competitive strategies, identify their areas of improvement, and can explore the new market opportunities. On the basis of that, they can do the strategic decision making, कि जो भी उन्होंने एनालिसिस किया, ट्रेंड देखा, कॉम्पिटिटिव कंपैरेटिव एनालिसिस किया, उनके बेस पे वो डिसीजन ले सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे उन्हें इम्प्रूवमेंट करना है, या फिर उन्हें कोई नई मार्केट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी चाहिए, उनका प्रॉफिट इतना है, या फिर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज जो हैं वो अपडेट करने हैं या उनमें कुछ चेंजेस करने हैं। सो ऑन दैट बेसिस दे कैन डू द डिसीजन मेकिंग. So industry analysis is a valuable tool for the investors, analyst and company management.
alike, and by understanding the industry landscape and benchmarking against peers, companies can make informed decisions, allocate resources effectively, and position them for long-term success within their respective industries. Okay, so in this company, as we had discussed in industry analysis, these things around 7 points. So it, at last we can say that it includes gathering and analyzing the financial ratios of the major players of the industry, and it helps in comparing the company's performance against the industry's average. So financial statement modeling in Excel, what it helps, it enables the users to project their financial performance, to conduct the scenario analysis by making the assumptions कि ये अगर है तो इसकी वजह से कितना impact होगा, and can make the data driven decisions. So it helps, or it facilitates financial statement analysis and benchmarking against the industry peers, fostering strategic agility and optimizing the financial performance. Now, financial analysis of a company. Financial analysis of a company, what it is like magnifying glass into the finances कि कैसे जो financial statements है उनको examine करना, understand करना कि जो company की performance है वो कैसी है, और ये क्यों important है. जैसे डॉक्टर चेक करता है patient के vital signs को regarding their health, जिससे कि वो जान सके कि जो health है उस पर्सन की वो कैसी है. लाइक वाइज फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प करता है वेरियस स्टेक होल्डर्स को अबाउट द हेल्थ ऑफ कंपनी की हेल्थ कैसी है. सो इट इज वेरी क्रूशियल फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स लाइक investors, lenders, managers to know if company is making money, managing its expenses in proper way, and handling its debt efficiently or effectively or not. Okay, and how they can do it? They can do it by gathering all the financial statement data, income statement data, balance sheet and cash flow statement data, and then they had to analyze these statement to calculate the matrices like profit margin, return on investment, debts, and then compare those matrices or industry bench matrices to the industry benchmarks, and then company's historical performances to see how it is stacking up. Keep actual is how much far from the standard one. And what does it tell us, or you can say what does it tell you about the company? It tells about a lot about the company's performance and its financial health. It helps to see whether the company is growing or not, whether it is making enough profit or and managing its expenses in a better and efficient way, if it is in good financial shape or not. Okay, so this information will help all the stakeholders, investors, lenders, managers to decide how to run the business. Okay, so in simple terms, we can say that financial analysis of a company is like peeling back the layers of onion to reveal its financial story, so that it helps to understand how the company is doing financially and what that means for future. So it is about this only. Now, construction of pyramid of ratio dopant analysis, I had explained what it is. It is like breaking down the company's return on equity into three parts, smaller parts, to understand what are the what's driving its profitability, कि इन तीनों में से profitability को कौन सबसे ज्यादा contribute कर रहा है और कितने कितने proportion में. Then it is a visual representation of the analysis where each layer represents a different aspect of the company's performance. And why it is important to calculate? Why? Because it it makes how you understand how the company is making profit, and helps the manager and investors to pinpoint which parts of business are contributing most to the profit, कि profit में सबसे ज्यादा contribution business में किन किन areas से आ रहा है. And how they can do it? They can break the RO into three components: profit margin, asset turnover and leverage. और ये तीनों मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है कि प्रॉफिट जो कंपनी अर्न कर रही है इन रिस्पेक्ट टू सेल्स वो कितना है, एसेट टर्नओवर इन रिस्पेक्ट टू सेल्स कितना है, और लेवरेज मींस कि जो फाइनेंसिंग है कैपिटल की वो डेट या इक्विटी उन दोनों का प्रोपोर्शन कितना है. ओके, सो what it tells pyramid of ratio or dopant analysis, what it tells,
it tells you which parts of company's operations are driving profitability. अगर ये ROE is high है, वो अगर high है तो इसका मतलब है there is a high profit margin, means company is making a lot of profit on each sale. If ROE is high because of leverage, not because of profit margin, तो इसका मतलब company is making lot of debt to boost its return and using lot of debt. Then if it's by understanding these three components, investors and managers can make better decisions about the company's future. Then I had explained this dopant analysis also. Then about this structure. Then report on industry, the last topic of your second unit. What it is? Report on industry's financial analysis is what? It's like a writing a story which explains how all companies and industries are performing financially, and it involves looking at financial statements of multiple companies within the same industry and then comparing their performances. And why it is important? Why? Because just like weather report tells you you should prepare for the day, a report on industry financial analysis, what it helps the investors, policymakers, business leaders to understand the state of that industry. Okay, so it provides insights and knowledge about trends, opportunities, challenges within the industry, helping the stakeholders and shareholders to make the informed decisions. And how they can do it? They can start by gathering that financial data of companies within the industry, including the income statement, their balance sheet, the cash flow statement, then analyze that data and calculate the key matrices like revenue कितना है, growth कितना है, profit margin कितना है, ROE कितना है, return on investment कितना है, right? और उनको फिर compare करना within industry and against the historical data so that they can identify the pattern and trends. And आफ्टर दैट जब वो ये कर लेंगे कि पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या है? दिस रिपोर्ट ऑन एन इंडस्ट्री financial analysis, what it tells a lot about how industry is performing as a whole. It helps us see which industries or which companies are leading the pack and which are lagging behind की जो benchmark है उससे उसको किन companies ने achieve कर लिया और कौन कौन से ऐसे companies है जो नहीं achieve कर पाए हैं. And it also helps to understand various factors which helps in driving the industry's performance, like changes in consumer demand, yeah, regulatory changes are there, or technological advancements are the reasons. So in easy terms, we can say that while creating a report on industry's financial analysis, it is like putting together all the puzzle with pieces of different companies and helps to see the bigger picture of how industry is doing financially and what that means for its future. Okay, so this was about reporting. Then your unit third, financial forecasting. Okay, just a second. Okay, this was about your unit second. Unit first and second we had discussed in detail. And regarding your practicals, you had a lot of practice you can do. And this is the revision about first and second unit. And if you do have any doubt, you can write it here in the chat box. Okay. Then we will let you know about your doubts. Okay, so your unit third is about financial forecasting, historical financial statement, integrating the linking integration and linking of those financial statements, lag and leak indicators, what those means, what are the forecasting techniques you can do while financial forecasting.
and related to it, what the terms financial turnover, forecasting turnover, expenses, current non-current assets, liabilities, adjusting for seasonality, these things means, and how you can project the financial statement. So unit third is about it. So we are just discussing about the unit third, what it is. Financial forecasting is like predicting future financial health of a company based on financial performance and current trends. It it's it's like looking at the weather forecast to plan your activities for the week and go ahead. And why is it important? Ki, okay, why is it important? Just like how you should know ki weather jo hai, according to weather, how you're going to plan your day. So forecasting helps the companies to plan their budgets, their investments, ki kitna budget hone chahiye, kitna investment they had to do in particular sector, and what will be their growth strategy. So for that purpose, financial forecasting is very much important. It gives them basically a roadmap to follow, कि इस तरीके से उन्हें एक रोड मैप प्रोवाइड करना कि ये चीजें उन्हें फॉलो करनी है, जिससे कि वो हेल्प उनको हेल्प हो सके डिसीजन मेकिंग में अबाउट देयर फाइनेंसेस. ओके, so that's why financial forecasting is needed. And how they can do it? They can do it by looking at the historical financial statements like income statement, balance sheet, cash flow statement, then analyze those statements, understand the trend and pattern of those statements related to revenue, related to expenses, assets, liabilities, and then integrate and link those statements. And on that basis, whatever the changes in statements are there affecting the other things, they had to take into consideration. Then they had to identify the lag and lead indicators. Lag indicators are what? Which shows that what already has happened, and lead indicators are those which give hints about ki this might may happen in the future. Okay, so what are those indicators? Ki lag indicators and lead indicators. Ki lead, those are giving you the information about the happening of future events. So then after identifying these, they had to use different forecasting techniques like trend analysis, regression analysis, qualitative methods to predict the future financial performance. Okay, and how what does it tells them? It tells financial forecasting helps them to see where the company is headed financially, what are the challenges company has to face, and what opportunities it might have. Okay, so it helps them to forecast their sales turnover, their expenses, their current and non-current assets, liabilities, how much their current assets should be, and how much of current liabilities they should have, how much asset turnover and sales turnover they should have. If there is a seasonality pattern in their business, so they had to adjust for that seasonality, like higher sales during the holidays or lower sales during certain months. So that seasonality pattern they had to identify and had to adjust accordingly. And ultimately, financial forecasting helps in creating projected financial statements, which shows that what we expect the company's finances to look in the future, look like in the future. Okay, so कि कंपनी के फाइनेंसेस कैसे दिखेंगे फ्यूचर में. सो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हेल्प्स इन दैट आल्सो. सो what it's if I say in easy terms, what is the main purpose of doing financial forecasting? Financial forecasting is basically looking like a crystal ball to see what the future holds for company's finances. So by analyzing the past performance, by analyzing the current trend, by analyzing the past performance, they can make the educated guesses about what is to become and plan accordingly. Okay, so it is about financial. So financial forecasting is the process of estimating, predicting the company's future financial performance based on historical data, current trends, assumptions about future conditions. So it involves creating projected financial statements like income statement, balance sheet, cash flow statement to provide insights about those potential financial profitability. Okay, so these are the explanation of these things. कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कि जो फाउंडेशन है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो है आपके इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर्स, जो कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बताते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में, उसके ट्रेंड और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, जिसके बेस पे आप प्रोजेक्शंस कर सकते हो. इंटीग्रेशन एंड लिंकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं दैट आर इंटरकनेक्टेड, एंड चेंज इन वन स्टेटमेंट
will lead to change in others also. Okay, तो अगर किसी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंज है तो उसकी वजह से बाकी स्टेटमेंट्स में भी चेंज होगा. So they are integrated. Okay, linked. Okay, so during your forecasting process, what you had to do, you had to essentially look at the link and that integrated projected statement, balance sheet and cash flow statement, so that you can ensure the accuracy and consistency and reliability of that decision, that calculations. Okay, lead and lag indicators are what? Lag indicators are financial matrices that reflect past performance, such as revenue, expenses, profits of the previous year. And lead indicators are what? On the other hand, they are the forward-looking matrices, means they provide you information or insights about your future performance. कि अगर कोई नया order आता है या customer आप acquire करते हो तो new acquisition rate क्या होगा उनका, then मार्केट के ट्रेंड्स क्या होंगे, लाइक दैट. देन फोरकास्टिंग टेक्निक्स, देयर आर वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग. जैसे कि आपका ट्रेंड एनालिसिस है जिसमें आप पैटर्न आइडेंटिफाई करते हो, इंटरपोलेटर एक्सप्लोरेट करके डेटा को, जिससे कि आप फ्यूचर की परफॉर्मेंस को फोरकास्ट कर सको. ट्रेंड एनालिसिस के बाद आपका रिग्रेशन एनालिसिस है जिसमें आप स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके आइडेंटिफाई करते हो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स के, और उसके बेस पे उन रिलेशनशिप्स को जो है आप प्रेडिक्ट करते हो. इसके बाद सिनेरियो एनालिसिस है जिसमें आप एजम्पशंस को देखते हो, कंसिडरिंग मल्टीपल पॉसिबल सिनेरियोज और उनका इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे. देन एक्सपर्ट जजमेंट इज ऑल्सो देयर, रिलाइंग ऑन द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट्स और कंपनीज मैनेजमेंट टू मेक द इन्फॉर्म्ड फोरकास्ट. Then forecasting turnover is there. Forecasting turnover is also known as revenue or sales, and it is also a crucial component of financial forecasting. It involves estimating the future sales based on factors like market condition, pricing strategy, customer demand, and competitive landscape. Then forecasting expenses, both operating and non-operating, are to be forecasted well. ठीक है, तो आपको दोनों ही अच्छे से फोरकास्ट करने हैं. इसमें आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर देयर, जो कि बेस्ड होते हैं आपके हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पे, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है, कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स कितने लिए हैं कंपनी ने, ये सारे आपको एक्सपेंसेस जो है फोरकास्ट करने होते हैं. देन फोरकास्टिंग करंट एंड नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, एज वेल एज नॉन करेंट एसेट्स लाइक आपके प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, ये भी आपको फोरकास्ट करने हैं, प्रेडिक्ट करने हैं. किस बेसिस पे? कि आपकी कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, एसेट्स का यूटिलाइजेशन कितना है, उसके बेसिस पे. ओके, देन फोरकास्टिंग लायबिलिटीज, दोनों की आपकी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना आपका बोरिंग रिक्वायरमेंट है, कितना डेब्ट रीपेमेंट आपको करना है, और क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस है अकाउंट पेएबल और लायबिलिटीज में. देन एडजस्टिंग फॉर सीजनैलिटी. सीजनैलिटी बेसिकली मींस कि अकॉर्डिंग टू सीजन्स अगर वहां पे फ्लक्चुएशंस हैं, जैसे कि गर्मी के सीजन में, समर सीजन में या विंटर सीजन में. विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स की सेल ज्यादा होती है और समर में उसकी बिल्कुल नील हो जाती है. तो ये एक सीजनल पैटर्न हमेशा दिखेगा उस, अगर कोई कंपनी वुलन क्लोथ्स के बिजनेस में है. तो अगर ऐसा सीजनल पैटर्न है, सीजनैलिटी इज देयर, सीजनल फ्लक्चुएशंस कोई बिजनेस अगर एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, अगर उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में उसकी वजह से कोई चेंज है, तो वो भी उसको आइडेंटिफाई करना है, फोरकास्ट करना है, जिससे कि वो उन सीजनल पैटर्न्स को एडजस्ट कर सके. देन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द कल्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल फोरकास्टिंग प्रोसेस is what? Projecting the financial statements, like projecting the your income statement, your balance sheet, your cash flow statement. Why? Because these statements provide you information about company's true financial position. It provides company's real picture behind in front of you. Okay, its profitability, its financial performance, financial position, allowing your informed decision, allowing you to take the informed decision, and your strategic planning, helping you to make a strategic planning. Okay, so on the basis of these financial forecasting is very much important. Then it's a crucial process which helps business to anticipate its future trend, identify its potential risk areas and potential opportunity areas, make informed decisions based on these, and take the strategic activities.
or initiatives in relation to it. Okay, so by leveraging the historical data, industrial trends, forecasting techniques, company can efficiently prepare and navigate their ever-changing business landscapes. So this was about your unit third. In brief, I had discussed uh, these notes. I think you do have your stop sharing. Your online as well material also is available. So these are the important things that I had discussed. Oh, shit. Who is this Vibha? What I had done denied. Hmm. Varun Chaudhary left invited. Okay, so this was about your unit first, second, and third. If you do have any doubt, can ask. सरोज मैम प्लीज आप इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए एग्जाम के लिए. हमारा एग्जाम कंप्लीट थ्योरेटिकल है बेटा. आई ऑलरेडी हैड डिस्कस द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन रिगार्ड टू योर सब्जेक्ट. About 3 units I had completed almost. So these all are your important topics and all are interlinked. If you prepare by going through the headings, you can know कि आपका हर part important है. Okay, so you had to prepare every thing. Any other doubt, students? I had explained in very easy language कि financial unit first में financial modeling क्या है, उसका application part, टूल्स हम क्या क्या यूज करते हैं, क्या स्टेप्स हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या मतलब है, जब आप मॉडल कंस्ट्रक्ट करोगे फिर उसका स्प्रेडशीट में आपको किस तरीके से करना है. ओके, इन वेरी इजी मैनर आई हैड मेक यू अंडरस्टैंड. देन अबाउट यूनिट 2 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडल्स क्या होते हैं, कैसे आप उनको बिल्ड करोगे, कैसे फाइनेंशियल एनालिसिस जो है करोगे आप कंपनी का, कैसे पिरामिड ऑफ रेशियो ड्यूपॉइंट एनालिसिस करोगे. इसके अलावा ड्यूपॉइंट एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस की भी बात की है कि रेशियोज के थ्रू आप कर सकते हो, राइट. और रिपोर्ट ऑन इंडस्ट्री आप कैसे शो कर सकते हो. ओके, एनी अदर डाउट? Rashika is typing. Ma'am, please describe lag and lead indicators once. बेटा lag and lead indicators क्या होते हैं, जो आपके lag और जस्ट अ सेकेंड, जब मैंने लैग और लीग इंडिकेटर्स की बात की है तो आपको बताया था जो आपके लैग और लीग इंडिकेटर्स हैं. जस्ट अ सेकेंड, ये क्या मैम क्या लिख रहे हो बेटा? लैग इंडिकेटर्स क्या शो करते हैं? विच शो अस व्हाट ऑलरेडी हैज हैपेंड, कि ये इवेंट्स ऑलरेडी आपके बिजनेस में हो चुके हैं और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ. ठीक है, तो लैग इंडिकेटर्स आर दोस, और लीग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो फ्यूचर में हो सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे जिनको आप एंटिसिपेट मतलब अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट दे कैन हैपन इन द फ्यूचर. ओके, सो लैग एंड लीग इंडिकेटर्स, बेसिकली लैग इंडिकेटर्स जब आप फाइनेंशियल मैट्रिसेस में देखते हो तो वो क्या होते हैं, जो आपके पास्ट परफॉर्मेंस में बेस्ड होते हैं, जैसे रेवेन्यू से रिलेटेड या एक्सपेंसेस से रिलेटेड या प्रॉफिट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कुछ चीजें हुई हैं, कोई चेंजेस हुए हैं, तो दोज आर योर लैग इंडिकेटर्स. और लीड इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, जो कि फ्यूचर में आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं कि जैसे आपके बिजनेस में अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो उसके रिगार्डिंग जो कस्टमर का एक्विजिशन है, कस्टमर उसको लेंगे, वो कितना है, कितना परसेंट रेट है उसका, ठीक है, कितने कस्टमर्स उसको खरीदेंगे, मार्केट के आगे आगे चल के उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ट्रेंड क्या रहेगा, कितने आपको न्यू ऑर्डर्स मिल जाएंगे. तो जो फ्यूचर से रिलेटेड इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, दैट आर योर लीड इंडिकेटर्स. और जो पास्ट परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं, दैट इज योर लैग इंडिकेटर्स. Okay, any other doubt? Okay, understood. Thanks, ma'am. Okay, Varun. Any other doubt? Okay, Kavita. Saroj, okay. Varun and asked Rashika, any other doubt?
Okay, should I end the class if you don't have any doubt? So remaining three units we are discussing. Remaining 2 units, if a class is scheduled, we'll let you know. Okay. Okay, students. Thank you all. One thing, I had shared the forensic accounting notes also. वो सबको मिल गए हैं? Forensic accounting and examination, fraud and forensic accounting से related. Okay. Okay, we'll share the notes soon when your all remaining topics are being covered. I think you had the study material of SOL also. From there, you can also prepare your notes by your own. Okay. And if you want mine, so I will also provide. Okay, in next class, if you want my notes, then we'll let you know. Okay, will let me know if you want. Otherwise, you do have your own SOL study material. From there, you can go through your notes. Okay, I'm leaving. Thank you all.